So welcome back class, है ना. Up till now we have learned till this example number 5. So we were learning about representing the values in table form or in pie form. So it was all about data representation. Next in our uh, chapter, the topic which we are going to learn is chances and probability. So probability ये आपका इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? क्या चांस है कि कोई इवेंट होगा, क्या चांस है कि आज बारिश होगी, है ना. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी. क्या चांस है कि आज आप स्कूल जाओगे, क्या चांस है कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो क्या चांस है कि आप लॉटरी जीतोगे, है ना. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी. अगर हिंदी में इसका मतलब बोले तो बोल सकते हैं, जैसे हम टिकट भी बुक कराते हैं, ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हमारी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी, है ना. पूछते हैं क्या कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अबाउट चांसेस, है ना. अगर कोई अपने को बोल देता है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, तो हम खुश हो जाते हैं. अगर कोई हम को बोल देता है सर ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपका टिकट कंफर्म है, तो 30% चांस है, या बोल देता है ऐसा 50-50% चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, है ना. अगर हम एक कॉइन को लेते हैं और उसको टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना. तो 50-50% चांस होता है. हेड आने का चांस भी 50% है और टेल आने का चांस भी 50% है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अपने पास रिजल्ट कितने हैं? हेड और टेल. दीज आर द टू आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. तो आउट ऑफ दीज टू, getting the chance of getting head is 1 by 2 and chance of getting tail is 1 by 2, that is 50-50%. Suppose we are playing ludo, है ना. We are playing ludo and we throw the dice. So there are, how many outcomes are there? The dice can either have value of 1, 2, 3, 4, 5 or 6. So there are 6 outcomes. 6 outcomes are there. So out of the 6 outcome, what is the probability of getting 1? So 1 is one of its outcome. तो इसकी probability क्या होगी जाएगी 1/6. So the probability of getting 1 when we throw a dice is 1/6. What, suppose someone says what is the probability of getting a even number when we throw a dice? So total number of result that we throw a dice will be 6. So out of 6, for even number we can either get 2, 4 or 6. So these are events. So number of these event is 3. There are 3 numbers out of 6 outcomes of throwing a dice. 3 are of getting an even number. So our probability of getting an even number when we throw a dice will be 3/6, that is 1/2, 50%. 50% is chances that we may get a even number or an odd number. So we just try to get some basic knowledge about probability. Now let us move to what the text is saying. Sometimes it happens that during rainy season you carry raincoat every day and it does not rain for many days, है ना. बारिश में होता है कि आप रेनकोट ले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है. However, by chance one day you forgot to take the raincoat and it rains heavily on that day, है ना. किसी खास दिन ऐसा होता है कि आप रेनकोट नहीं ले जाते हो, है ना. एक दिन रेनकोट आप छोड़े, 10 दिन तो आप रेनकोट ले जा रहे थे, आज आपने रेनकोट छोड़ा, उसी दिन बारिश हो गई.
Sometimes it happened that student prepare for 4 chapter out of 5, है ना। तो आपने एक चैप्टर छोड़ा, सोचा कि अरे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 4 मैंने कर लिए, 5 में से 4 कर लिए, हो जाएगा इतना, पास तो हो ही जाएंगे। बट मेजर क्वेश्चन जो आ गए, 80% क्वेश्चन जो आ गए, वो उसी एक चैप्टर से आ गया जो आपने छोड़ दिया था, है ना। तो दिस इज योर बैड लक। कई बार ऐसा होता है कि हम 2 या 3 ही चैप्टर पढ़ के जाते हैं और उसी 2-3 से भरपूर क्वेश्चन आ जाते हैं ना। सरस्वती माँ की अपने पास कृपा जब बन जाती है तो उसी से आता है, जो पढ़ के जाते हैं अपन उसी से आ जाता है। तो इन दैट केस वी आर लकी। सो दैट इज अ मैटर ऑफ चांस, है ना, चांस की बात है। एवरी वन नोज दैट पार्टिकुलर ट्रेन रन्स ऑन टाइम, है ना। ऐसा ट्रेन में भी होता है कि हमें पता होता है कि ये पैसेंजर ट्रेन है तो ये तो लेट ही रहती है, तो हम भी लेट ही जाते हैं, लेट से पहुंचते हैं स्टेशन। लेकिन ये वो पता होता है कि उस दिन वो एकदम बिल्कुल राइट टाइम चल रही थी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन की हिस्ट्री ऐसी है, राजधानी में हमने टिकट बुक की है, अरे राजधानी है तो ये तो बिल्कुल टाइम पे ही रहेगी, कोई इसमें वो डाउट नहीं है ना, वंदे भारत है, बिल्कुल टाइम पे ही रहेगी। लेकिन उस दिन पार्टिकुलर दिन जिस दिन हमें ट्रेन पे चढ़ना था, हमें पता चला कि स्टेशन जाके हमें 1 घंटा पहले वेट करना पड़ा, है ना, 1 घंटा वेट करना पड़ा, उस दिन ट्रेन लेट हो गई हमारी। तो we cannot just judge, it's all a matter of chance and probability. But probability gives the idea in terms of percentage. You face a lot of situation such as these where you take a chance and it does not go the way you want it to. Can you give some more example? These are examples where chances of certain things be happening or not happening are not equal. The chances of train being in time or being late are not the same. When you buy a ticket which is wait listed, you take a chance. You hope that it might get confirmed by the time you travel. Okay? So it's all the matter of chances. आप टिकट खरीदते हो, है ना, वेटिंग लिस्ट में आपका वेटिंग रहता है 100, आपको पता नहीं है अब ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है ना। However, consider here certain experiment whose result have equal chance of occurring. Okay, बट हम जो अभी अभी इस लेवल पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट लेंगे, सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे जो इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरिंग है, जो हमारे रिजल्ट हैं उनका जो चांस है वो इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरिंग है। व्हाट इट मीन बाय so we came across certain event or certain experiment or certain situation where there are equal chance of the results of happening of results, and we come across various situation where the chances of happening some event is not equal. Suppose we toss a coin, है ना, एक coin को हम toss करेंगे तो head और tail आएगा, और head आने का चांस कितना परसेंट है, 50%, और tail आने का चांस भी कितना है, 50% है। सपोज हमने एक डाइस को हमने रोल किया, तो अपना आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स हैं, और ये हर आउटकम्स को आने का चांसेस कितना परसेंट है, 1/6 है। तो दीज आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब हर एक इवेंट को होने का जो चांस है वो इक्वल है ना, हर एक इवेंट को होने का जो चांस है वो इक्वल है। लेकिन जो रियल लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते हैं, उसमें इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेन का टिकट लिया जो कि वेट लिस्टेड है, वेट लिस्टेड 20 वेट लिस्टेड है, वेट लिस्ट मिला। अब इसको कंफर्म होने का चांस ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि
ये तो हम बोल सकते हैं या तो कंफर्म होगा या नहीं होगा, लेकिन कंफर्म होने का क्या चांस है वो फिक्स नहीं है, वो हमें नहीं पता है। 20%, 30%, 40% है ना। एक कोई ट्रेन है जो रोज हमारी टाइम पे आती है, टाइम पे आती है, लेकिन आज वो टाइम पे आएगी या नहीं आएगी, है ना, इसकी हम गारंटी नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री देख के बोल सकते हैं कि 90% प्रोबेबिलिटी है ये टाइम पे आएगी, है ना। बट वी कैनॉट बी श्योर। इस केस में हम बोल सकते हैं कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि हमें रिजल्ट जो है 1 मिलेगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें रिजल्ट जो है टेल मिलेगा या हेड मिलेगा, है ना। तो सो देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट whose results have equal chance of occurring। जैसे ये सब जो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक हमने डाइस फेंका हुआ एक्सपेरिमेंट हो गया, एक हमने टॉस किया हुआ एक्सपेरिमेंट हो गया, और इसके जो रिजल्ट्स हैं हेड और टेल, इसके रिजल्ट्स हैं, तो इसका इक्वल चांस ऑफ अकरिंग है। ये डाइस वाले केस में हमारे ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं, तो इनका चांस ऑफ अकरिंग भी जो इक्वल है 1/6 है, हर एक रिजल्ट्स के होने का चांस 1/6 है। तो दीज आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना। ये हमें नीचे आएगा। तो अभी जो हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ईच ऑफ द आउटकम्स हैव सेम चांस ऑफ ऑकरिंग, है ना। तो क्योंकि ये हम प्रोबेबिलिटी जो है बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8 में हम हैं। जब हम क्लास 9th में जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो इससे हमें हाई लेवल का प्रोबेबिलिटी आएगा, है ना। उसमें एक जो आउटकम आना होगा वो दूसरे इस पे दूसरे इवेंट से अफेक्टेड रहेगा, है ना। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी जो हम क्लास 8 में फोकस करेंगे वो जो वैसे एक्सपेरिमेंट को फोकस करेंगे जिसमें whose results have equal chance of occurring, ठीक है। now getting a result, you might have seen that before cricket match starts, captain of the two teams go out to toss a coin and decide whether the team which team will bat first, तो वो टॉसिंग करते हैं। So what are the possible results you get when you toss a coin? So either you get head or a tail. Imagine that the captain of one team and your friends is the captain of other team. You toss a coin and ask your friend to make a call. Can you control the result of toss? No, you cannot control. It will come either, it can come head also, it come tail also. Can you get head if you want the one? No, you cannot get head if you want the one, or tail if you want the one. No, there is no guarantee and there is no control of yours. No, that is not possible. Such experiment are called random experiment, where you don't have any control over the results. Head or tail are the two outcome of that experiment. So there are two terms: random experiment, where we don't have any control on the results or outcomes, and the results of those that experiments are known as outcomes. For example, we throw a dice, so what numbers are coming, 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are outcomes of that experiment. Try these. If you try to start a scooter, what is the possible outcome? So if you try to start a scooter, it may start or it may not start. When you throw a dice, what are the 6 possible outcomes? Simply 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the possible outcomes. So these are outcomes, and throwing a dice is experiment. This is outcome of starting a scooter. It will start or not start, and starting a scooter is an experiment. Now, in this example, when you spin the wheel as shown in figure 4.6, what are the possible outcome? So when you spin this wheel, so you may get the results outcomes A, B or C. These are the outcomes of this experiment of
rotating the spin. Now, the example fourth, uh, you have a bag with 5 identical balls of different colors. So you have balls, suppose you have TT ball, table tennis balls of identical shapes and size, but the colors are different: white, red, blue, green, and yellow. And you pull out a ball without looking at it. So you just put your hand inside a opaque bag or something, dabba, and you take out the ball. So what will be the outcome you get? So outcome, you might get the blue, you might get red, you might get brown, you might get green. So you might get any color of the ball. Okay. So outcome, this is a random experiment, and these will be the results. Random experiment, why? Because you cannot tell what is the probability of getting whether you will get white, red, or blue. You cannot tell beforehand. You can get any of these. Think and discuss and write. In throwing a die, do the first player have greater chance of getting a 6? Suppose you play dice, your 4 friends are playing Ludo, and one of the friend, first player, throws the dice. So do he has a greater chance of getting 6? No, there is nothing such. He may got 6, he may get 6, he may not get 6. There is no uh, preference for first player that he will get 6. Would the player who played after him have lesser chance of getting 6? So the second player uh, will he will have any effect on his chance of getting 6? No, there are independents. Suppose the second player got a 6. Okay, does it means that third player would not have the chance of getting 6? No, it will not be affected by. Third player will not be affected. None of the player will be affected by their results. None of the other player will be affected by the result of other players. So because the throwing a dice is such an experiment that every of its outcome are equally likely, equally likely. A coin is tossed several times and the number of times we get head or tail is noted. Let us look at the result, the sheet where we keep the increasing the tosses. So we have kept the increasing the tosses in the first example. First we tossed it for 50 times, and we just measured the number of heads and number of tails we got. So in 50 in tossing the coin 50 times, we get heads 27 times and tail 23 times. When we we go on increasing the number of tosses, so when we toss it for 100 times, we get heads 48 times and tails 52 times. Okay, so we what will be our observation, that as we increase the number of tosses more and more, from 50 we increase number of tosses to 100, the number of heads and tail come closer and closer to each other. So number of the events came closer to each other. Number of heads and number of tail came closer to each other. This could also be done with a die. The same experiment we can also try with a die. So we will find that number of each of the 6 outcome come almost equal to each other. In such cases, we say that different outcome of the experiment are equally likely. तो हर इवेंट का जो है जो हर आउटकम है उसके होने का चांस इक्वली लाइकली है. हेड आने का चांस भी उतना ही है जितना टेल आने का है. 1 आने का चांस भी उतना ही है डाइस फेंकने में जितना 2 आने का, जितना 3 आने का है. दिस मीन्स दैट आउटकम्स हैव सेम चांस ऑफ ऑकरिंग, है ना. तो all the outcomes have same chance of occurring.
linking chance to probability. Now how we link chance to probability? Consider experiment of tossing a coin once. What are the outcomes? There are only two outcomes, head or tail. जब हम एक coin toss करते हैं तो either we get head or we get a tail. Okay, so these are the two outcomes. Likelihood of getting a head is 1 out of 2 outcomes. So we say that chance of getting, probability of getting head is 1 by 2. And similarly the chance of getting tail is 1 by 2. Now when we take the experiment of throwing a die marked with 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its face, if you throw it once, what are the outcome? So outcome can be any of these. Thus there are 6 equally likely outcomes, and the probability of getting 2 is, so 2 is one of its outcome. So it will be 1 by 6. Total number of outcome is 6. What is the probability of getting number 5? So number 5 is one of its outcome and total outcome is 6. So the probability of getting 1 by 5 is also 5 is also 1 by 6. What is the probability of getting number 7? So probability of getting number 7. So since number 7 is not any of its outcome, so 0 by 7. So 0 by something is 0. That is probability of getting 7 is 0. What is the probability of getting number 1 through 6? So 1 through 6 means uh, you 1 to 6 including 1 and 6. You should read pages 1 through 10 means you should read page 1 to 10 including 1 and 10. So 1 through 6 means the results should be 1 to 6 including 1 and 6. So there are 6 such outcomes, and the total number of such outcome total number of outcome is also 6. So it is, the probability is 1. It is a sure event. When you roll a die, you will get any number, for sure between 1 and 6 including 1 and 6. So this is a sure event whose probability is 100%. 100% probability.